Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So we will read one purport and verse and then we will begin. This is verse number 40, first chapter. Sorry? He said we are right. Yeah. अधर्म अविभावत कृष्ण प्रतिशन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. इसका एक कम कर एक जीरो कर दे पूरा ट्रेबल थोड़ा बढ़ा. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of the womanhood, a descendant of Vrishni, come unwanted progeny. Purport. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress in life. The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in the society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashram system. On the failure of such Varnashram dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Hare Krishna. Quite a heavy purport. Yes. So, we will clarify this. Hare Krishna. So, how many of you visited the temple at Janmashtami? You are not there. You are not. Okay. So you can come on Radha Ashtami. Yes. I just told them. Yeah, bring both of them. अच्छा आपके ओके वहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम था और बड़ौदा में जो मेन मंदिर है ना वहाँ फ्लड आ गया था बहुत कैंसिल तो हमारे वहीं के साथ मैं भी कहता इस्कॉन टेंपल नहीं गया था. हाँ ऐसे. Okay, so all of you can come on Radha Ashtami. The schedule is not yet decided whether it will be celebrated on afternoon, because that day fasting is still 12 only. Radharani appeared on 12 noon. Except for Lord Krishna, all other incarnations avatar, they appeared at 12 only, noon. Krishna at midnight 12. Midnight. 11th September. Hare Krishna. So welcome all of you. Sorry, the train got delayed. It could be done. I think we can revise the timing to 11:30. Looks like 11:30 to 1. Is that okay? Because anyways 11:30 हो ही जाता है. Somehow or other 11:20, 11:30. So because you come early and keep waiting, it doesn't look good. I don't mind. You can come and discuss your weekly activities. That is what we are doing. exactly what we just did. गीता का डिस्कशन ही हो रहा था आज. क्या है रहा था? आज गीता का डिस्कशन हो रहा था. That's good then. You can come. But otherwise, I am feeling guilty from my side. Please don't. We had a Janmashtami in Kupoli, so we all came from there. He had a bike, so he came from bike. But we both were in the train.
So Kurla उतरा तो बोले मेगा ब्लॉक. In 1 minute that train was till 11 only. So that train which was coming from Kopoli to CST got delayed. So something like that. So last time we completed till verse number 35. okay. Quite confidently you are telling. Means you have did the homework. Okay. 12, 1.32, 35. Yes, so Arjuna will give total 5 reasons. Do you remember which are the 5 reasons? Do not fight the battle. One reason only we have got discussed. Yeah, which one? That he has compassion towards his relatives. Yeah, that is in the verse number 28 230. to 30. He is feeling compassion for the body, not for the soul. That Krishna will answer in the second chapter. Then another reason is loss of enjoyment. I think that is in the verse number 31 to 35, right? Yes. Another reason. Yeah, 32 to 35, loss of enjoyment. Arjun said that if all my relatives, if they will die on the battlefield, then to whom I will show my opulence. Isn't it? We discussed this, right? Because आनंद किसमें है? दिखाने में. जितना दिखाओगे उतना मजा आता है. पर जब नहीं रहेगा और दिखाने को नहीं मिलेगा तो उतना ही पेन भी होता है. रिवर्स उसका रिप्रिकॉशन भी हमें देखना चाहिए. Like last time you said you want likes. Yeah. On Instagram you want likes and people if you don't get likes you get disheartened. Where is that Mataji? She is coming. He's also late. Oh, she is coming. She's Okay. Ruby Mataji, right? coming. Okay, then 36th verse. पापमेवाश्रयेत् अस्मान् अद्वैतान् आततायिनः तस्मान्नहर वयं हन्तुं भारतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं स्याम्य माधव. Yeah, somebody get the translation. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsmen? Okay, I'm just leaning towards the wall. Okay, fine. So this is third reason, starting from here, verse number 36. Fear of sinful reactions. पहला कारण था कंपैशन, दया आई उनको, अर्जुन को, कि ये मारे जाएंगे सब लोग. दूसरा कारण था ये इको कम नहीं किया है. हरिबोल दोनों दो है इको के, 0 कर दो. हरे कृष्ण. ट्रेवल क्यों कम कर रहे हैं? हरे कृष्ण. तो सेकंड कारण क्या था? पहला था Loss of enjoyment. loss of enjoyment. Second loss of enjoyment. Sorry, loss of enjoyment. Fear of relatives. Compassion. Very compassion for relatives. Yeah. Now the third one in this verse is fear of sinful reactions. क्यों? Because ordinarily, if you kill someone, there is sin, right? What to speak of killing? If you give someone gali unnecessarily, without reason, that doesn't mean that with reason if you gali, there are no reactions. There are still reactions. एक महाराज का सुंदर स्टेटमेंट है, भूल गया मैं, बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है. हाँ, harsh words once spoken, even if you beg forgiveness, still they have effect. Harsh words once spoken, even if you beg forgiveness, still they have the effect. On whom? Who speaks the words? On whom? For whom you have spoken. आपके ऊपर तो होता ही है, but उसके ऊपर भी होता है. मतलब आप कितना भी माफी मांग लो,
एक बार जो घाव लग गया, आप उसकी नरम पट्टी कर दो, बट लग जाता है ना आखिर। But if you are ready to do प्रायश्चित for it, कुछ भी करो आप प्रायश्चित करके मुक्त हो सकते हैं, बट सामने वाले को जो हर्ट हो गया, द इमोशंस एंड द डीप, क्या बोलते हैं उसको आप, या It's like you can forget, but you can't forget. यू मे नॉट फॉरगेट, सॉरी यू मे फॉरगेट, opposite person. No, the person जिसको बोला गया है, Yeah. वो सामने वाले को forgive कर सकता है, लेकिन हाँ, अंदर yes. कहीं भूलता नहीं है। you will not be able to forget it. कि अभी आप आपके डेली लाइफ के एग्जांपल ले लो, किसी ने किसी को गाली दी है कभी, या मतलब कैसा रहता है ना कि sometimes some relationships are so delicate, थोड़ा भी कुछ बोल दो डर लगता है, मैं बोलूँ तो क्या सामने वाला समझेगा। It's like something like walking on the landmine, इधर थोड़ा पैर रख दो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसे भी होते हैं ना रिलेशनशिप्स। और कुछ आपने बोल दिया किसी को, आपने 1000 बार भी माफी मांग लिया बाद में, स्टिल जो दुख आया उसको दुखने, वो उसको जो एक्सपीरियंस या द एक्सपीरियंस थ्रू विच ही वेंट, उसको तो आप नलिफाई नहीं कर सकते ना। एक्सपीरियंस जो हुआ तो हो गया, खत्म। सो यू विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट एंड accordingly law of karma will punish you for that, even if you get forgiveness. प्रायश्चित कर भी लो, नलिफाई भी कर लो, बट एक्चुअली ऐसा नलिफाई नहीं होता है इन वन सेंस। यू कैन काउंटर पाप विद पुण्य, right? So of course that is really a very detailed topic, out of scope right now. So पाप लगेगा। अभी क्यों पाप लगेगा? अर्जुन बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, आततायन। आततायन means aggressors. There are 6 kinds of aggressors. Prabhupada mentions in the purport. According to Vedic injections, there are 6 kinds of aggressors. Number 1, a poison giver. कोई आपको अगर जहर खिलाए तो आपको अधिकार है उसको मारने का। Number 2, one who sets fire to the house. उसको भी मारने का अधिकार है आपको। Number 3, one who attacks with deadly weapons. उसको भी मारने का अधिकार है। Number 4, one who plunders riches. उसको भी आपको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। One who occupies another's land. You can still protect yourself against that. One who kidnaps a wife. These are the 6 kinds of aggressors mentioned in the Vedic scriptures. Against whom, if you take action, you have the right to take the action. But Arjun, अभी अगर आप महाभारत हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो 6 घटनाएं हैं ये पांडवों के साथ हुई है। पॉइजन दिया था भीम को। Yes. One who sets fire to the house, Lakshagra. Then one who attacks with deadly weapons, that was happening on and off. One who plunders riches, पूरा किंगडम हड़प लिया था। One who occupies other land, ये भी था। One who kidnaps wife, ये भी हो गया था। ये सारी चीजें पांडवों के साथ हो गई थी। Now Arjun can kill them, and Krishna is telling you kill them. He will tell eventually. But Arjun says, what Arjun says, such aggressors are at once to be killed, and no sin is incurred by killing such aggressors. शास्त्रों में स्वरक्षा करने के लिए प्रावधान है। There is amendment for that, just like in your constitution. आपको रहेगा ना? But now if you do this, will you be present? Sorry? Is this applicable in the career? Yeah. Whichever you were. No. If you do this kind of an act right now, you will be definitely present inside. See, I am not talking about third class government right now. I am talking about, or rather, not I am, but scriptures. Based on scriptures, the Vedic injunctions, these are the 6 kinds of aggressors against whom you can take action. And nobody can put you under prison. अभी तो क्या है? और हॉच-पॉच। वैदिक सिस्टम से कौन चलता है आजकल?
So forget about that. But the standard is this. Even अपने इसमें भी है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा डायरेक्टली ये मेंशन नहीं किया होगा, बट खुद की रक्षा के लिए आप अपना बचाव कर सकते हो, है कि नहीं? अगर आपको कोई मारने आएगा तो आप उसको मार सकते हो, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इजंट? अधिकार है आपको। अरे वो कोर्ट बाद में वो डिस्प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे, अलग बात है वो। अभी रास्ते में कोई अगर हिट एंड रन केस हो जाता है, उसमें भी ड्राइवर को माफी मिलती है, मालूम है ना आपको? अगर पता चलेगा कि वो उसने कुछ इंटॉक्सिकेशन लिया था या सो ऑन, बहुत सारे उसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। But Arjun, what he is saying, such aggressors are at once to be killed. Yeah, there is no sin. Such killing of aggressors is quite befitting any ordinary man. But Arjun was not an ordinary man. लो, अभी देखिए, according to देश काल पात्र, हर किसी के लिए अलग अलग कंडक्ट होता है. Not that every man will act in the same way in same situation. Depending on his character and his dynasty and his social status, उसको अभी देखिए, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को भी रोज लोग गाली देते हैं, सोशल मीडिया में भर भर के पोस्ट बनाते हैं. Not that he does press conference and he says कि ये आपने ऐसा बोला तो ये ऐसा है, नहीं करते ना वो. हर किसी का अलग अलग रिएक्शन होता है. Not like every ordinary human being, they will react or respond to every situation. Similarly, for Arjun, Prabhupada says he was a saintly character. He was by saintly character, and therefore he wanted to deal with them in saintliness. But Prabhupada says this kind of saintliness, however, is not for a Kshatriya. Although a responsible man in the administration of a state is required to be saintly, he should not be cowardly. For example, then Prabhupada used the example of Lord Ram. Ravana kidnapped Sita Devi. So Lord Ram punished Ravana for all the time, all the ages to know how he punished. एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया भगवान ने. Just to get back one. अभी देखिए भगवान क्या थे, उस समय राजा थे, क्षत्रिय थे, चाहे तो हजारों शादियां कर सकते थे वो, लेकिन वो बोले नहीं, मैं सीता को लेके आऊंगा, एक सीता के लिए पूरा लंका को उद्ध्वस्त कर दिया. बराबर है कि नहीं? कोई बोल सकता है कि एक स्त्री के लिए इतना क्या, बट ही वांटेड टू सेट अ स्टैंडर्ड. व्हेन समवन अटैक्स योर वाइफ, यू हैव टू बी लाइक लॉर्ड राम, राइट? आजकल तो क्या है, दुनिया हॉस्पिटल है, कोई किसी को पड़ी नहीं है क्या स्टैंडर्ड, क्या कल्चर, क्या, but this is the Vedic standard, and this is one thing. But at the same time, if you go a little ahead, Prabhupada says, these are the things a person is supposed to act in such situations. But Prabhupada says, but in Arjuna's case, however, one should consider the special type of aggressors. कि जितने भी लोगों ने अटैक किया है इन 6 चीजों के साथ, ये कोई साधारण लोग नहीं थे. ये कौन थे? उनके ही अपने काका, मामा, चाचा, अंकल, ताऊ. वो भी करे क्या? इनको मारना भी चाहिए, लेकिन कैसे मारेंगे? तो आपके, अभी समझो आपके किसी रिश्तेदार ने चोरी की है आपके घर पे, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे पुलिस में. किसी ने अगर तुम्हारे चलो तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा पैसा नहीं दिया है तुम्हारे रिश्तेदार ने, तो तुम क्या करोगे? रिश्तेदार मतलब कौन सा रिश्तेदार? नॉट डिस्टेंट, वेरी क्लोज. These are very close personalities. Either you will try to avoid it, or you will ask politely. Because it is a matter of your prestige also in the modern context. आपको उसे भूलना ही पड़ेगा जो भी आपको नुकसान हुआ है. So different people have different stance based on your understanding and how you approach it. In general, people try to avoid because it's a matter of social prestige also. अगर कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है तो, कुछ लाखों का है तो चलो पैसा नहीं देने मत दे, लेकिन कोर्ट में मत जा भाई मेरे, बोलते हैं ना लोग, बदनाम हो जाएगा नाम पूरे फैमिली का.
घर वाले आदमी ने चोरी कर दिया, देखे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे देखे हैं। And in some cases, you may take a very strong stand. नहीं चाहिए मुझे. Depends on your personality. Personality. These are different personalities. But for Arjun, he was not an ordinary person, so Prabhupada says he had to consider. And moreover, these people are very special people. Bhishma, Drona, and apart from Duryodhana and all those 100 cousins, quite close, right? एक ही महल में रहे, एक ही जगह पढ़ाई किया, एक ही जगह सब कुछ हो गए वो लोग। तो क्या करें अभी? See, this is the complication of life. जीवन ऐसे complication आपको देगा कि you will just get confused like anything. कि क्या करूँ मैं? And then Prabhupada says further, yeah, this is what 36, right? Such injunctions are for saintly persons are more important than any political emergency. Arjun considered that rather than to kill his own kinsmen for political reasons, it would be better to forgive them on grounds of religion and saintly behavior. He did not therefore consider such killing profitable simply for the matter of temporary bodily happiness. After all, kingdoms and pleasures derived therefore are not important. Therefrom are not important, so why should he risk his life and eternal salvation by killing his own kinsmen? Now, this purport of Prabhupada is from the point of view of a pure devotee. एक शुद्ध भक्त कैसे विचार करता है? जाने दो ना, ये सब संसार का झंझट क्यों? वैसे भी कुछ तो परमानेंट है नहीं संसार में। इस तरह से एक भक्त विचार करता है और उसके ऊपर जो कभी injustice होता है, then it tolerates and just move ahead. But again, another side of the devotee will be explained further ahead in the next purport. Right? इसलिए अर्जुन ने सोचा कि जाने दो। वो लोग बोलते हैं ना मेरे मैसेज में था, छोड़ दो इसको, you know? क्योंकि सिचुएशन इतना डेलिकेट है और कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मारू इनको तो ये प्रॉब्लम होता है, नहीं मारू तो ये प्रॉब्लम होता है, चुपचाप बैठू तो भी दुनिया गाली देगी, तो क्या करूं मैं? वो गाना है ना कौन सा, मेरे वो ही आंसू करूं मैं, क्या करूं मैं? Of course, वो गाना थोड़ा अलग एंगल में है, but this is the way life will put you in most difficult situations, most complications, you know. And in such cases, we need the expert guidance of a spiritual master. So then, in the next verse, Arjun says, अभी देखिए, अर्जुन इतना पढ़ा लिखा आदमी है, अब रीजनिंग करेगा. He will give his own reasons. क्यों मारना नहीं चाहिए? Already 3 रीजन दे चुका है. Number 1, compassion. Number 2, loss of enjoyment. ये भी ठीक था, चलो, मतलब भगवान बोलते कि क्या मूर्ख आदमी है, क्या compassion? उन्होंने तुम्हारा धन दौलत लूटा है. अच्छा कोई बोलेगा ठीक है नहीं पाप लगेगा, चलो वो भी मान लिया. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Sorry, second is loss of enjoyment. Third he is giving solid reason. पाप लगेगा, isn't it? ये solid reason है कि नहीं? If you kill someone, you get the sin. If you kill your own men, you get more sin. अपने घर वालों को मरवा दिया बोलेगा कोई, है ना? Now, 37 to 38 he says, यदि ये तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन. Now he is almost about to cry. He is already cried. जैसे बच्चे रहते हैं ना, आपने देखा कभी-कभी तो मैं सत्संग प्रोग्राम में चले बच्चों को कभी-कभी देखता हूँ तो उसको उठाता हूँ, पहले मतलब कुछ नहीं, नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस, चुप रहता है, गोद में लेता हूँ. 1-2 मिनट के बाद इतना बड़ा जोर से वाह करके चालू हो जाता है, खतरनाक, मतलब जस्ट वो मतलब he is just gathering the momentum about to burst out. तो वो इतना मतलब is something like that. Arjun is just मतलब ऐसे ऐसे करके अभी चालू होने वाला है, अभी जस्ट हुआ है ऑलरेडी, बट अभी वो जोर से रोएगा, है ना?
Yeah, somebody read the translation. O Janardhan, although these men, their hearts overtaken by grief, see no fault in killing one's family over quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? Yes. देखो कितना अच्छा बोल रहा है. It's a very good speech. He's saying, शायद उनको बुद्धि नहीं होगी, वो लोग बेवकूफ है, लेकिन मैं थोड़ी, I'm intelligent. Why should I kill them and incur the sin? Who can see the crime in destroying? They cannot see the crime in destroying family, engage in these acts of sin. Right? Or call him Janardhan. Right? He is addressing him as Janardhan. Janardhan means proper. इसमें लिखते हैं जनार्दन कहाँ गया word to word. He is one of the name of Lord Krishna, Janardhan. Where is it? Yeah, वो कृष्णा. और थोड़ा उसका डिटेल नहीं था, यहाँ पे नहीं दिया है. Right. So now, yeah, Prabhupada says a Kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is invited by some rival party. See, this is another reason why Yudhishthira Maharaj was not able to avoid the gambling match. Kshatriya, when he is challenged, he cannot avoid either gambling, anything. नहीं तो उसका एक अपना अपमान अलग होता है, डिसऑनर. चैलेंज किया ना, I will have to take part in it, whether gambling or war or anything. Under such an obligation, Arjun could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjun considered that the other party might be blind to the effects of such challenge. Arjun, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all this pros and cons, Arjun decided not to fight. What a systematic judgment, scientific. कितना अच्छे तरह से बता रहा है. थोड़ा उसका हल्का सा टेबल क्लियर करो. मतलब anybody will get convinced. सही है यार, अर्जुन सही बोल रहा है. पहला क्या था? Compassion. हरे कृष्णा. मारना नहीं चाहिए, बराबर. दूसरा क्या था? लॉस ऑफ इंटरनेट. सही कह रहे हैं यार. किसको दिखाएंगे ये सब धन दौलत घर परिवार? किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? किसके लिए कर रहे हैं? अंबानी ने शादी किया, कितना 5000 करोड़, राइट? वो उसका कुछ भी नहीं था, उसके लिए चवन भी था, बट स्टिल मतलब जब तक दिखाएंगे तो मजा कैसे आएगा? आपको, he is very pious man, no doubt. He is a bhakta of Srinath ji, so we respect him, but then this is the way of material life. पर इतना किया नहीं है, कोई बोलते हैं छोड़ दो ना, सोशल मीडिया में तो फैला है ना. आजकल सोशल मीडिया ही आपका पार्टी मैरिज हॉल सब वही है. हमारे महाराज जी भी जाके आए, उनसे मिले बस. See, my happiness is he got the blessings of Radhanath Swami. एक साधु का आशीर्वाद लिया ना, then he will get some piety somewhere. बाकी दुनिया भर के लोगों को जो दिया लिया, दुनियादारी किया, that's okay. हम लोग को भी आप आशीर्वाद दे दीजिए. कौन? मैं नहीं देता. अरे यार, भगवान का फोटो किधर है? अच्छा, हम लोग उधर से आए, उधर आशीर्वाद देने के लिए राधा गोपीनाथ जी और प्रभुपाद. We are all discussing Bhagavad Gita, right? First, I'm again revising your reasons. पहला रीजन क्या है? Compassion. Second reason? Loss of enjoyment. Third reason? Fear of small sinful activities. Simple reactions. पाप लगेगा. Fourth reason? For reason you have not witnessed. Now this is the fourth. Yeah, have we come to the fourth reason? Yeah, almost, but not. It will be clear in the next verse, 39 till end. Yeah, so now here Arjun के पास actually क्या हुआ है? दो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. There are two roles which Arjun is getting conflicted. एक तो अर्जुन का रोल है as a Kshatriya, he is supposed to fight the war, but at the same time he has to protect his dynasty. अपना कुल भी बचाना है ना, तो कुल को बचाओ तो फिर क्षत्रिय धर्म फॉलो नहीं होता है. क्षत्रिय धर्म फॉलो करो तो कुल नहीं बचता है. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट. तो इसको कहते हैं
Yeah. Arthashastra versus Dharmashastra. Arthashastra means political science. As a king, he is supposed to protect his kingdom and fight. But from the point of view of religion, Paplave is something like, let me give an example. Suppose, yeah, you are a parent, right? You have two roles, not too many roles. But sometimes one or two roles will conflict. Say, for example, you are in a hurry to go to the office, but then at the same time you have to attend something, some household issue you have to address or take care. होता है ना ऐसा? जाना है लेकिन यहाँ पे अटका हुआ है, गुस्सा आता है, ऑफिस में लेट हो रहा है, फिर यहाँ भी छोड़ नहीं सकता, मामला खराब हो जाएगा पूरा. So I mean, you got the point? Correct. We understood. I understood. This is Arjuna's case. Or I'll tell you from my example. As a preacher, suppose somebody is counselor, and then at the same time I have to go to some program. कोई नया प्रोग्राम है कहीं पे, जैसे आपके प्रोग्राम में कभी भी आना होता है. आपके प्रोग्राम तो नहीं होता है, बट कई बार ऐसा होता है, इवनिंग some festival is going on in the temple, and then I have some services in temple, just like cooking services. तो मुझे पूरा करना है. उधर से फोन आते रहते हैं, कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो. मैं निकल रहा हूँ यार, थोड़ा सेवा. और शाम को ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरा, तो अभी जाना भी है लेकिन अटक गया. जाना है, राइट? कॉन्फिडेंट एकदम. या फिर आप काउंसलर हैं, आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, और दूसरे किसी, मतलब प्रीचर का एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरे प्रोग्राम में जाना है, लेकिन काउंसलिंग छोड़ ही नहीं रहा है. मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना है. ऐसा होता है. कल शाम को हुआ था ऐसा, एक माता जी आ गई इधर, बाहर सब प्रोग्राम में बाहर खड़ा था, मैं थोड़ा सांस ले रहा था, वो पूरा क्राउड में से बाहर निकल गया. तो आ गई, बोली मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम है. मैं बोला सबके घर में प्रॉब्लम होता है. मतलब मैं मन ही मन बोला, उसको बोला नहीं ऐसे. बोलने लगी मेरे हस्बैंड को मैंने डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती किया है. बोलने लगी कि at one time we were very prosperous, but suddenly he got addicted to alcohol, and then बताने लगी ऐसा हुआ, उसको डी एडिक्शन सेंटर में डाला. मुझे बोलने लगी आप कुछ करते हैं क्या? उसको लगा मैं कुछ जन्म पत्रिका देखूंगा, कुंडली वगैरह देखूंगा. मैं बोला आपका कुंडली है ना, जस्ट टू गिव अस सोलेस. उधर से अंदर से कॉल आ रहा था, अरे प्रसाद के लिए आ जाओ, वाइंड अप करना है. मैं बोला था आ रहा, रुको जरा. इट वाज गोइंग ऑन इंटेंस डायलॉग हियर. अंदर से बार-बार बोला जल्दी आओ, वाइंड अप करना है. बोला अरे आ रहा, रुको. सो इट इज लाइक दैट. एंड समहाउ उसको थोड़ा सा सेटल करके फिर मैं अंदर गया. These are some simple examples, but Arjuna's case is very, it's emotional turmoil. क्या करूँ मैं? इनको मारूँ? मेरे लोग कैसे मार सकता हूँ मैं? He was not ready to kill only. अगर हम उनके जगह पे होते हैं, तो हम definitely मतलब भगवान तो बोलने वाले बात में मारो करके, हम बोलते हैं I don't believe in God now. है कि नहीं? अगर आपको कोई आज बोले you kill your relatives who are responsible for any other, जो भी हुआ होगा, आप नहीं मार सकते. You may say right now कि मैं मारूंगा, जब आपके ऊपर आएगा ना, नहीं कर सकते आप. Since we are not Kshatriyas have the thing they can go and kill. Since we are not Kshatriyas and we are not bound to, we have. Your Vaishyas. Yeah. So we don't have that thing of killing anybody. See, it is not a question of, it's there, but it's not just a question of being Kshatriya or Vaishya or whoever. It is a question of having faith on the Lord. And Lord says, do this, what you will do. And you may have your 100 reasons. ये एक दुनिया में हो रहा है ना. आज पूरे संसार को हम चिल्ला के कहते हैं chant. Where is Nilesh Prabhu? Yeah, he said. Tell him to chant 16 rounds in Dwarka. I've seen his photo. Yeah. He said he started chanting one round. Tell him
As long as in Dwarka, he should chant 16 rounds. Okay. Otherwise, no entry in the class. See, सारा संसार ये तो कर रहा है ना, विश्वास की बात है ये, और कुछ भी नहीं है. Throughout this whole Bhagavad Gita, we are just trying to build our faith on God. Whatever God will do for us is the best for us. ये अगर विश्वास आ गया, you have understood the Bhagavad Gita. और कुछ भी नहीं है गीता का पर्पस. यहाँ पे अर्जुन भी 1000 रीजन देगा. He will tell hundreds of things. ये तो खाली 5 समराइज करके दिया है, but he has hundreds of things going on in his mind. Even in the Kurukshetra war, if you remember, Yudhishthir Maharaj, he was told to lie. Do you remember the episode of Ashwatthama, killing of Ashwatthama, son of Dronacharya? Elephant. Yeah. Elephant Devadashi. Yeah. Ashwatthama was so powerful, he couldn't be killed by anyone. So Krishna had to devise this means. युधिष्ठिर महाराज अगर बोलेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये झूठ नहीं बोल रहे. And Krishna used that trick. अश्वत्थामा हतो हत नरो हुआ कुंजरो हुआ. कुंजरो में हाथी. और जब कुंजरो करके बोला ना युधिष्ठिर महाराज ने, उस समय भगवान ने शंख ब्लो कर दिया जोर से. कुंजरो सुनाई नहीं दिया, खाली नरो सुनाई दिया. You know that story. And then he was killed. But Yudhishthir Maharaj initially he denied. He said, I am Satyavadi. I cannot die. I cannot lie. Rather, I will die. Bola Yudhishthir Maharaj. And for that one, moment when he lied, he had to see the hell. उसका reaction. Yudhishthir Maharaj जैसा सत्यवादी व्यक्ति, मतलब so pious among all 5 brothers. He is Dharmaraj. He is directly born from Dharmaraj, Yamaraj. But technically he didn't die. Who? Technically he didn't die. He said. Yeah. But see, and there is another thing. But Yudhishthir Maharaj had to tell lie. That is the point. झूठ बोलना पड़ा ना उनको. जबकि वो सत्यवादी थे, बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा. भगवान बोले. सिमिलरली अर्जुन के साथ हो रहा है, हम सबके साथ ही हो रहा है. भगवान बोलते हैं, you chant my name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, थोड़ा घर में बहुत सारा काम है. नहीं, थोड़ा ऑफिस में बहुत सारा काम है. नहीं, मेरा पर्सनल हेल्थ ठीक नहीं है. नहीं, मेरा माइंड ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है. नहीं, आज मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ. ऐसा करते करते जिंदगी बीत जाता है. जबकि भगवान बोल रहे हैं बार-बार, have faith on me. If you chant my name, you are thinking that you will settle your life on your own. But Krishna is saying throughout the Gita, you can't settle yourself unless you settle me in your life. First settle me, then I will settle you, and along with you, everyone who is connected to you, उनको भी settle कर दूंगा मेरे जीवन में. It's not that just you, but you are connected to so many people, right? मैं मेरा खुद का एग्जांपल देखता हूँ. मैंने कितना 3 साल ही जॉब किया कॉलेज में, लेक्चरशिप का. 3 साल में मैंने छोड़ दिया. और मैं जब छोड़ रहा था तो my mother was crying. So then who will take care of us and what will happen to us? And but then inspiration was coming from this side. You come, I'll take care. You come. अभी कितने साल हो गए? लगभग 10-15 साल हो गए. Nicely taken care. Nicely मतलब whatever required, that is always there. कभी किस चीज का हुआ नहीं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं खुद अपने हाथ में लेके उनका केयर लेने जाता तो मुझे नहीं लगता मैं इतना कर पाता. बिकॉज ऐसा नहीं होता कि संसार में आप सिर्फ सबके लिए काम, आप खुद के लिए करते हैं ना. एंड वी आर, जब अकेला है तो अकेला है. जब साथ में कोई आ जाए, बाय प्रोडक्ट्स आ जाए, दुनिया खड़ी हो जाए, क्या किसका केयर लेंगे? कितने माता पिता है जो केयर ले पाते, मतलब माता पिता का बच्चे केयर ले पाते हैं? वेरी फ्यू एग्जांपल्स. अदरवाइज I mean the old parents, they are just neglected. In many, I have seen in many families. तो लोग खाली बोलने के लिए बोलते हैं, I will take care. मुझे मेरा जिम्मेदारी है घर का, मुझे जॉब करने का टाइम नहीं है. अच्छा, घर का भी बहुत सारा जिम्मेदारी ले रहे हो क्या? ठीक से चेक करने हो क्या तो पता चलेगा, है ना. मदर फादर कैसे निगलेक्टेड हैं, वाइफ कैसे निगलेक्टेड है, बच्चे कैसे. एक्चुअली एवरीबॉडी वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, नथिंग. कुछ बेसिक रिलीजन और पाइटी है तो हम देखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं. यू आर टेकिंग केयर. बट जब तक हम लोग हार्ट से क्लीन नहीं हुए हैं, क्लीन ऑफ अनर्थास, एक्चुअली वी कांट बी वेल विशर ऑफ एनीवन.
यही यहाँ पे हो रहा है अर्जुन के साथ, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं जब करने के लिए। क्यों? मैं संसार में बिजी हूँ, दुनिया में बिजी हूँ। ये ऐसा जस्टिस देते 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 क्या हो रहा है? Life with you. हमको भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। That's the point. All of you are chanting Hare Krishna. Yes. How many rounds? 4 rounds. I'll keep asking till you reach 16. Okay, you are chanting 4. Good. From this Janmashtami. No. Since if we Our last class. 1 week. 1 week. Okay, good. So what is the response from the other side? How many you are chanting? Keep it. Maintain it. Let it increase. एक फैमिली था, मैंने उनको पूछा आप कितना जप कर रहे हैं हस्बैंड? वो बोल रहे हैं 17 राउंड। तो 17 बोलते हैं मेरी वाइफ 16 मैं 1 टोटल 17। बोला ऐसे नहीं बाबा, मुझे फैमिली कोटा नहीं चाहिए, इंडिविजुअल कोटा चाहिए। So we have 10-15 minutes. Yes, we have time. We have time. So आप कितना कर रहे हैं? मैंने एक मारा था। महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र। गुड। 1 से 2, लेकिन अभी कंपटीशन आ गया है तो बढ़ाना पड़ेगा। Yeah. You take 2. तुमको भी 4 बजे उठना पड़ेगा। क्या? 4 बजे? 4 बजे? 4 बजे नहीं। हमारे एक रत्नावती की माता जी है, आपको मैंने अभी इस ग्रुप में डाला नहीं है अभी तक। If I add you in that group, थक जाएंगे आप। उसमें मतलब कितने लोग हैं? 15 members are there in that group. पोस्टिंग कितने करते हैं? 16-17 लोग। आसान नहीं होता है जब करना। But there are people who chant like 64 rounds every day. Morning 2 o'clock they will get up, start chanting. By 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock they will finish. घर गृहस्थी वाले लोग बोल रहा हूँ मैं, नॉट टेलिंग अबाउट ब्रह्मचारी। वृंदावन में रहते हैं, एक माता जी है जो हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में आते हैं गीता में। डेली 64 राउंड्स 2 AM till 7 o'clock। ये उनका शेड्यूल 365 डेज। रात को 8 बजे 8:30 बजे सोना है, मतलब सोना ही है। No way. See, discipline is required for that. If you are disciplined, you can chant. अपना क्या है यार, रात के 11-12 बजते तो भी चलता रहता है। See, a life of preacher is different. You don't go by my life. Sometimes हमारा ऐसा होता है, अभी कल रात को 11, 11:30, 12 बज गए, 12:30 बज गए। But we try to regulate as far as possible. 4 माला तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। 16 का मतलब आते रहता है, 16 पूरा हो गया, 16 पूरा हो गया, 16 पूरा हो गया। So I think it's a time to add you in that group. No, you will get inspired. See, मैं कहाँ बोल रहा हूँ 16 करने के लिए, 4 तो करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अभी से रह गए। आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है। Who's that? मोहतलाल। किलो मोहतलाल। 16 rounds a day. वो, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब लोग 16 राउंड टाइम करते हैं every day. They come for Yeah. and Guruji tells she is wife of Mokata. Yes. तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या काम रहेगा क्या? And beyond that, he is chairman of the temple also. He is managing temples, many management activities. घर संभालना है, फैक्ट्री संभालना है, इतना करके कैसे मैनेज करते हैं? I manage whenever suppose I travel also. Traveling when you have time. So yeah, I know that 8 to 9 minutes I can complete 108 rounds. So that is the time. Even though if I don't have my beats, I can chant. I know within 8 to 9 minutes I finish it. So I use that particular time. I chant. Pay attention, brother. You are happy or not? शायद मैं You are not happy. मैं सोचती हूँ मैं You are happy. Yeah, she's very happy. Very happy. Okay. मैं कुंभकर्ण की तरह बहुत नहीं। Good. Body तो कुंभकर्ण जैसा नहीं है. See, the only thing is everything is possible if we prioritize. Priority देना चाहिए. Priority देंगे तो हो जाता है.
A human being is supposed to chant 16 rounds. Prabhupada said. Anybody who is a human being is supposed to chant. He has the capacity to chant. आप एनालाइज करो ना दिन में कितना टाइम आपका जाता है सोशल मीडिया में या ऐसे ही सोते हुए या यहाँ वहाँ दुनिया की बातें करते हुए यू एनालाइज एंड देन यू डिसाइड whether I am putting my faith on Krishna or my faith on my abilities or so many other things. Vishwas, Arjun. So 4, 1, 1, 2, half. Achha, half. Okay. Don't think like that. No, regulate it. Chant daily. Even if you chant one round, chant daily. Regulation is required. Steadiness, regularity. 1, 1, 1. Okay, good. So Radhashtami is coming. You can again try to think of to increase. These festivals, they are time to increase. Then again Kartik will come. Kartik Mas. It's very auspicious. And November, May, October, Diwali. Again that time you can think of revising your number. And I think by that time, जो भी आज एक कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2 पे आने चाहिए. Isn't it? 2 पे आ जाएंगे. You continue 4. Now you can't come back. You can go up. As I said, 8. That is nice. है ये भक्ति योग में ज़्यादा है इसका खान कर्म योग में अरे सब लोग करते हैं. सोना वाला कोई बड़ी कठिन बात नहीं है. आपको अभी क्या है यार थोड़े से नए हैं ना तो आपको से डर लगता है कि ये इतना टाइम सब लोग करते हैं. उस ग्रुप में 315 मेंबर करते हैं. बहुत सारे लोग पोस्टिंग कर रहे हैं बाद टाइम नहीं मिलता उनको बट तो देखती हूँ वहाँ पे जॉब सारा टाइम खाते हैं होते हैं सारा टाइम क्या है ये गले में लटका रहेगा आपके. हाँ जब 16 रहेगा ना गले. See then you have a constant meditation on the Lord because every time चलता रहता है 16 पूरा करना है 16 पूरा करना है. This is the trick to make you God conscious, right? So this is the way. ये अगर 16 राउंड से करते हैं तो एक ही बार में कर सकते No, not necessarily. Prabhupada, when he was householder, Prabhupada used to tell that he would chant 4 in the morning before breakfast, 4 in the afternoon before lunch. 2 हो गए, 8 हो गए, 4 in the evening and 4 in the night. ऐसे करके 16 पूरे करते थे. Not that you are not busy, you are really busy. I understand, but then there are ways also. If you give priority, you can, and you should, and you must, and you. There are you get certain periods where you have 10-15 minutes free. Yes, yes. So in that 10-15 minutes, 1-2 rounds can be completed. That's you have to regulate yourself that okay, you utilize that time to this. See, इतनी याद रखना. Actually, मेरे पास एक सीक्वेंस था. मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको. Spiritual life is never, कि मुझे जब आनंद आएगा तभी करूंगा. Spiritual life में मेहनत करोगे तो आनंद मिलेगा. You have to put your voluntary endeavors. Without that, you will not be rewarded. Never think that कोई ड्राइवर मुझे मिला था अभी. तो ड्राइवर बोल रहा है कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन भटकता है. तो क्या करना है? कुछ आपके पास है क्या? मैं बोला क्या जादू? गोली खाओगे तो फिर मन वापस आएगा. मैं बोला इसी को तो कहते हैं साधना. इसी को कहते हैं अभ्यास. मन भटकेगा वापस लेके आओ, भटकेगा वापस लेके आओ, भटकेगा वापस लेके आओ. This is called as practice. This is exercise for a student. And when you become perfect, then your mind will not get diverted to many things. Attention रहेगा जगह पे. ऐसा जब करेंगे then you are rewarded with the happiness of spiritual life. Free में नहीं मिलेगा spiritual life का happiness. You can't buy it with money. You can't buy it with your power, influence. Nothing. You can buy it with only your desire. I want to do it. I want to do it. I have to do it. I must do it. And then one day, when you reach 16, there will be another levels of challenges. ऐसा नहीं कि 16 आने के बाद settle हो गया. Different challenges, but then you will at least reach that stage and you will enjoy it. Right? So this is the way. This is भगवद गीता. इसलिए लोग कभी कभी ना रिलेट नहीं कर पाते. चैंटिंग क्यों बोलते हैं? भगवद गीता और चैंटिंग का क्या संबंध है? यही तो संबंध है. This is practical भगवद गीता. Right? So this is what verse number 37, 39, 38. कितने रीजन हो गए अभी तक? 3.
वापस रिवाइज कीजिए। Very हाँ, तीन वापस रिवाइज करना। पहला compassion for his relatives. कंपैशन, सेकंड Loss of enjoyment. थर्ड Fear of Sinful sinful reactions. and the fourth reasoning is destruction of the family tradition. That is in the verse number 19. We read this verse and then just discuss few points for 5 minutes and then we wind up for today. That is verse number 39, right? Yeah. Kulakshaye pranashanti kuladharma sanatana dharme nashte kulam krishnam adharmo avibhavati. Yeah. Who is it translation? With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. Yeah. ये सीरीज है पूरा कनेक्टेड फ्रॉम 39, 40, 41, 42, 43 till 43, 44. इस सीक्वेंस वे अर्जुन इज सेइंग, देखो इसका कनेक्शन क्या है, पूरे परिवार में जो यंगर जनरेशन है उनको कल्चर कौन देता है? एल्डर्स, बराबर, स्पेशली ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, not you because you are busy. You don't have time, you go to the office. Yeah, if the mother is also working, both they go to the office. एक मेरे कपल है उधर बॉम्बे में, दोनों वर्किंग है, छोटा बच्चा है उसको काम में डालते हैं, वो रहता है ना क्या बोलते हैं, बेबी केयर, डे केयर, उधर रहता है बेचारा दिन भर, दोनों वर्किंग है। तो बड़ा खासा लोन लिया उन्होंने घर लेने के लिए, तो वहाँ पे वैकुंठ ग्रामल के बारे में लिया है थाने में, इसका मंदिर है ना, तो दे हैव टू वर्क और कल्चर देगा। अभी घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, नहीं देंगे। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि these are all elders like भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, if they are killed then who will give the culture, who will tell them about religion? आज यही तो हो रहा है ना, या तो घर में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है कि बच्चों को क्या सिखा, खुद वीडियो गेम खेलते थे बड़े बड़े लोग या फिर मैं उस दिन मरीन ड्राइव गया था, वो एक कपल बैठा था, मैं बोला ऐसे बैठ के पानी की तरफ देख रहे हैं, तो क्या हुआ, दोनों देख रहे हैं, थोड़े में देखा कुछ थ्रेड जा रहा है पानी में, वो फिशिंग वाला रहता है, मैं बोला मरीन ड्राइव में फिशिंग, वो डाल के बैठे, बोला ये मैच टाइप का रस्सी लगता है, ऐसा उस पर उसमें एक मेटल लगा रहता है, वो फेंकते पानी, बाद में देखा मैंने, बैठे, मैं वहाँ गया था, अपने कुछ 2-4 लोग ऐसे फ्रेश हवा जब करने के लिए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, ऐसे बैठे देख रहे हैं। जिंदगी में कुछ काम धंधा नहीं है, जस्ट मतलब ह्यूमन लाइफ इज सो प्रीशियस एंड रेयर, टाइम कितना वैल्यूएबल है, जस्ट सिटिंग, कब मछली पकड़ेगा उनको बोलेंगे ना जब करो, नो वी आर वेरी बिजी, नो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, ये करना है, वो करना है, ये सब के लिए टाइम मिलेगा उनको, लिटरली वो 1.5-2 घंटा तक बैठते, मैं वहां से निकल गया तभी बैठे थे, और तब तक पता नहीं, मैं तो देखने रहा था क्या हुआ, अभी कितना क्या किया उन्होंने, बट इस तरह से यू नो लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, प्रॉपर डिजिटल इन वेस्टर्न वर्ल्ड, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वही जाके फिशिंग करते हैं, तो देखा होगा, दिन भर बैठ के वही, मतलब कुछ मालूम नहीं है जिंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, देयर इज नो कल्चर, नो ट्रेनिंग, इस तरह से ह्यूमन लाइफ इज वेस्टेड। नाउ अर्जुन, अभी हम लोग को लगेगा क्या घर में बूढ़े लोग हैं तो क्या हुआ, अच्छा होगा अगर वो बाहर चले जाएंगे तो हमको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, बट दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कल्चर देने का काम करते हैं एल्डर, अर्जुन बोल रहे हैं एल्डर में रहने तो उनको कल्चर कौन देगा। नाउ द लिंक इज, if there is no training, no culture given to the kids, especially to the girls, that's the purport we read, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो संस्कार विहीन रहते हैं, they easily get polluted, adulterated, फिर ऐसे लोगों को क्या संस्कार देंगे, समाज को क्या देंगे, घर को क्या देंगे, संसार को क्या देंगे, and that is what your whole Bollywood and Hollywood industry, ये तो कल्चर देते हैं ना। लोगों को लगता है जब तक मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है मतलब मेरी जिंदगी में कमी है, ऐसा लगता है लोगों को, मेरा तेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, एक लड़की यू डोंट हैव बॉयफ्रेंड,
मतलब यू आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ। अरे क्या मिसिंग, जिंदगी अच्छा है, जिन्होंने बनाया उनको पूछो उनके साथ क्या हुआ। इंस्टाग्राम लव, मतलब दुनिया इतनी आज इल्यूजन में है। एक हमारे उस दिन सत्संग में सुन रहा था मैं, दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज इल्यूजन। इस इल्यूजरी वर्ल्ड के अंदर भी एक वर्चुअल इल्यूजरी वर्ल्ड हमने बनाया है ये जो फोन है वो भी इल्यूजन उसके अंदर है ना। और उस दुनिया में लोग लगे रहते हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरा ये है वो है, एंड देन सो फोर्थ। हम देखेंगे आप अभी ये डांडिया होता है, क्या बोलते हैं उसको आप, गरबा। केवल नेम सेक रिलीजन को यूज करना है अपने, है ना, एंजॉयमेंट के लिए। उसके दूसरे दिन आपको मालूम है कितने न्यूज आते हैं, ये हुआ वो हुआ, कितने क्या अबॉर्शंस हो गए क्या इवेंचुअली। मतलब देयर इज नो ट्रेनिंग ओनली। रिलीजन को तो ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, नेम सेक, लाइसेंस के तौर पर। तो दैट्स व्हाट अर्जुन इज टेलिंग। अगर ये एल्डर मारे जाएंगे, nobody will be there to give the training, and there is no training, and they will get polluted. And once they are polluted, there are no good population in the society. No good population means all are animals. Animal means they are just fighting. That's it. And there is a peace. That's what the whole Western world is like that. Eventually, it is coming to India. सब अगर खूंखार जानवर बन जाए, कौन किसको प्रोटेक्शन देगा और कौन किसको केयर करेगा, कैसे शांति रहेगी समाज में, राइट? सो दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक एक्चुअली। अर्जुन इज so no doubt Krishna will give good answers to this, and he will also tell how to protect and all that. So for that you have to come to the next class. And one purport, one line you may have read it, that women are less intelligent. वो काफी हेवी जाता है लोगों को। So this is not for women actually. वो किसी स्त्री के लिए नहीं कहा गया है। कैसे नहीं कहा गया है, I'll tell you in the next class. You'll have to wait. Yeah, 1 week and just keep thinking ये कैसे। You better remember and tell us. Yeah. Hare Krishna. I hope you are not confused. These are words of acharyas. Acharyas, they have concern and care, and that's how they present the scriptures. See, boldly कौन बोल सकता है जिसको अपने फॉलोअर के प्रति कंसर्न है। और कुछ लोग क्या कहते हैं ना, उनको बहुत चिंता रहता है, अरे कुछ ज्यादा हेवी बोल दिया तो छोड़ के चला जाएगा, ये मेरा फॉलोअर चला जाएगा। We don't care for that. We care for your welfare. इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, there are 4 regular principles: no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. इतना बोलते हैं आधी पब्लिक गायब। आधी क्या, 70% पब्लिक गायब हो जाती है। अरे बाप रे, ये संस्था तो खतरनाक है। ये 4 चीजें गायब हो तो हम क्या करेंगे? क्या मीट ईटिंग, Yes. वो गया तो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, अरे बाप रे। इलिसिट सेक्स मतलब क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड नो बॉयफ्रेंड। वी डोंट से नो, बट वी से रेगुलेट इट एंड मेक इट स्पिरिचुअल। प्रभुपाद के टाइम में भी बहुत सारे कपल प्रभुपाद को मिले थे वैसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। प्रभुपाद बोले, यू लव दिस बॉय, नो प्रॉब्लम, बट गेट मैरिड and live together as a husband and wife, not like cats and dogs. Then उसमें क्या होता है, उसका भी भला नहीं होगा, उसका भी भला, सब ultimately it leads to destruction only and just frustration in the life. यही तो मॉडर्न कल्चर है, बराबर ना? ये जो सिंगल रहने का कल्चर है, eventually just frustrates you and nothing. मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, not that I have gone through it, but I have seen and day and day out people are coming and telling us ये हुआ मेरी जिंदगी में। कुछ तो ऐसे मैरिड कपल भी आते हैं, मेरा पति यहाँ जाता है, क्या करता है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो क्या, यू आर मैरिड, तुम्हारे पति का गर्ल, और वो छोड़ना भी नहीं चाहता है उसको। नॉट दैट आई एम प्रोपेगेटिंग इट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। इस तरह से लोग बिना अध्यात्म के, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी नहीं है वहाँ पे डिग्रेडेशन होना ही है। आप कुछ भी करके नहीं बचा सकते किसी को। नो वे टू सेव योरसेल्फ। ओनली वे टू सेव योरसेल्फ इज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। वो भी कैसा, सिस्टमेटिक, प्रॉपर।
नॉट दैट धर्म के नाम पे मैं डांडिया खेलने जा रहा हूँ और फिर वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डांस करते हैं फिर हरे कृष्णा। सो दैट्स व्हाई इस्कॉन में आप देखेंगे जो भी आते हैं असली खरा सिक्का बोलते हैं ना आप, जिसको सचमुच फॉलो करना वही आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपके प्रोग्राम में जो नहीं आए उनको फॉलो नहीं करना है, दे वांट टू फॉलो बट स्टिल कोई होते जो नहीं कर पाते, छोड़ भी देते। दैट इज ओके ना, ट्राई तो कर सकते हैं। जिंदगी में कौन परफेक्ट है? हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर था, वो हमारे यूज पिता भी था, it was totally like that. Suddenly what happened, he joined ISKCON. And he was there for I think 4 or 5 years. 4-5 years, then again he came back. Then again left ISKCON, came back to the material world. दैट्स ओके। 4-5 साल उसने जो किया है ना, that will help him at the end of life. And then even within this life also, he may come back also. If मेरा एक रिलेटिव है, वो इस्कॉन जाता था, इंजीनियर था, मतलब उसने इंजीनियरिंग की थी बैंगलोर से, लेकिन वो काम ही नहीं करता था। वो इतना भैया बार करता कि इस्कॉन में, फिर मेरी भाभी करके उसको लेके आई उसको इस लाइफ में रखा, लेकिन वो मतलब वो सारा टाइम ध्यान करेगा, वो करेगा, तो हम लोग को लगता था कि पर वो पीता था। हाँ, मैं बताऊंगी, वो बहुत पीता था। लास्ट में उसकी माँ बाप सब चले गए, इज नॉट वर्किंग, तो जो प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा हिस्सा से चल रहा था। लेकिन फिर सोच रही थी मेरी भाभी कि इसका क्या होगा, मैं देखती हूँ मेरे भाई को, लेकिन कोई और है नहीं उसका। लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई है, वो 7-8 डेज उसकी भाभी बोली पता नहीं क्यों फोन नहीं करता, नहीं तो गीता अजय भाभी के साथ फोन पे करता था, दोनों भाई बहन करते। लास्ट डेज में वो बीमार हो गया, पता नहीं पड़ा, तो हॉस्पिटल में उसको दरवाजा तोड़ना पड़ा, वो जहाँ रहता था तोड़ के उसको हॉस्पिटल ले गए। तो बोले अब तो इतना खर्च आएगा, कहाँ से लाऊंगा, उसी से सोच रहे, लेकिन वो 7 days चला गया। हुई ना, और उसके पास जितने पैसे थे उतने ही खत्म हुए और वो चला। life is not easy. Many even within ISKCON also, many sannyasis they also leave. हाँ, तो वो सन्यासी बन गया तो फैमिली को Many monks also leave. Not that. See, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, don't surprise how many people come to ISKCON. Be surprised how many stay. Because this is war against Maya. And the war is not easy. Very difficult for everyone. At your level, you have your challenges. At my level, I have my challenges. Everyone has their challenges. But जो steadily अपना साधना करेगा, under guidance of his superiors, जो भी उसके instructor है, उनके under में रहेगा, he will survive. And there are many successful examples in ISKCON. There are many examples. But there are some cases also where the person has deviated and left the movement and just gone into the मेरे को समझ में oblivion. नहीं आ रहा है। हिंदुजा का बेटा था ना, उसने सुसाइड किया, तो इस्कॉन में हिंदुजा हाँ, मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले। इसमें कौन सी नई बात है माता जी? देखिए, मैंने कहा ना, माया इज वेरी पावरफुल। माया जानते हैं ना? माया मतलब सैटन। Illusion is very powerful in this world. Unless you are rooted in the scriptures and you have good satsang, you cannot overcome. Not possible. जिस दिन आपको लगेगा I am independent, I can do my own things, now I am trained, I am educated, I know गीता, बस। गीता का उद्देश्य यही है कि आपको सत्संग में बना के रखे। But sometimes people think मैं अभी educated हो गया हूँ, I am self-sufficient. उस दिन समझ जाने का अपना हमने खोल दिया है, कबर खोल दिया है। Our destruction is just waiting. इसलिए सत्संग में बने रहो। सत्संग के अलावा संसार में कोई आश्रय नहीं है। Be connected with सत्संग and that's the power only. जो अकेले अकेले बाहर घूमते हैं ना, जो भी आज बोलते हैं ना, मैं अपना अच्छा हूँ, उनको खाली पूछना, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा ये करना होता है, बस पूरा उगल देंगे वो 2 मिनट के अंदर, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा टच करके देखो, है कि नहीं? सोशल मीडिया ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी को, जो ऐसे अकेले लोग रहते हैं, हाँ उनको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं।
किसी को भी नहीं ट्रस्ट आपको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट है क्या, पूछ लो। हाँ नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अजीब देखिए, है अगर एक अपना इंसान को ट्रस्ट सी नहीं दिस करो इज द क्वेश्चन ऑफ योर अहंकार। ईगो इतना बिल्डअप कर लिया है कि आपको किसी के ऊपर विश्वास, मतलब ईगो इतना हाई है कि मैं जो सोचता हूँ मैं वही हूँ, ठीक हूँ, बस यू डोंट वांट टू हम्बल योरसेल्फ, डोंट वांट टू सरेंडर। If you can't surrender to the person next to you who is there with you for 24 hours, how you will surrender to God? That begins from there. When you surrender, then the surrender increases day by day, and then you will eventually surrender to God. इसलिए ये सब बहुत, मतलब गीता is not to become पंडित. Gita is to humble yourself. कि I am nothing, I don't know anything. At the end of the Gita, if you understand this, then you will become, you will get the degree. Otherwise, no convocation. Hare Krishna. So please keep chanting. I am telling you again and again. Chanting. मेरा क्या सोच है चलते फिरते नहीं करो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ? only sitting No, counting में रखो लेकिन. हाँ But counting has to be there. श्वास 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 मेरे जेब में रहता है, अभी भी है. Always keep this. You have time, you chant. गाड़ी में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, प्लेन में चल रहे हो, कहीं भी चलो, चैंटिंग करते रहो. अपना प्रिस्क्राइब जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो पूरा होना चाहिए. 4 and 1. Wow, 4 against 1. It's quite a big challenge to all of you. So let us see who will fight. Hare Krishna. So we have 5 minutes. But keep chanting. इसलिए I remember You want to go? I have to go to What about your prasadam? I'll घर पे I'll grant much prasad. Thank you. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय. So there is a prasadam prayer before we honor prasadam. So we will chant that also. Mahaprasade Govinde Namo Brahmane Vaishnave Svalpa Punyamatam Rajan Vishwasunaya Jayate Shariya Vidyadar Jaritriya Nahikar Veere Bhaile Vishesagare Bhagavate Divati Yogo Maya Sudurmati Bhagavata Sare Sare Krishna Gada Gaya Mai Gari Gare Jeev Jai Prasad Nadi Lo Bhai Jai Shabit Pao Shri Radha Krishna Gao Premena Krishna Jai 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय श्री श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसादम की जय. वो किचन वाले बोलेंगे इन लोगों का खत्म क्यों होने वाला है. So this is a Mahaprasad prayer. I will post you in the group. Okay. The beautiful meaning for that. Okay. When we honor prasadam, please Yes. offer.